still not received. We are not able Okay, to you'll have download. to ping Kunal for the same. Yeah. Okay, yeah, fine. Okay, anyways, so till now, let me do one thing. I'll just quickly walk through this whole thing again ताकि steps आपको दिखे. Okay, you come to App Manager, you come to New Lightning app, right? Whatever label you want to display, image if you want to add, आप जो भी icon डालते हैं आप वो icon upload कर सकते हैं. It saves that as the app header. Let's make the color thing 0 and console navigation we were going with. We were disabling end user personalization. Okay, let's keep this in it. Keep all of this in it. And right now, what is this setting? This is something which we have not yet explored, which is at the bottom of this, you will see there is something called a utility bar. Now within this app, आप multiple items add कर सकते हैं in the utility bar. Okay, you can add something called a to-do list, जहाँ पे आप अपने लिए task बना सकते हैं. Right, you can see your history. So ये utility bar is something जो आप app के according you can customize to yourself. So let's keep हमारे app के लिए हम क्या क्या add करना चाहते हैं. See here, these are all the options that we can keep within that bar at the bottom for quick access. So let me do one thing. I'll add a to-do list and I'll also add notes. Right? आप अपने लिए notes लिख सकते हैं and to-do list लिख सकते हैं. So these are two utility items I have added. Now we come to the main navigation structure. जब आप app बना रहे थे, you must have been thinking कि ये at what point it is decided किस app में हम क्या क्या दिखाएंगे, right? Someone has to do this initial update when we are working with app. Standard apps के लिए Salesforce करके देता है, custom apps के लिए आप करेंगे. So we do for ours, and there is only one object with for now, which is employees. Okay, and actually let me put something else. Let me add a home tab also. Okay, ये टैब को हम मॉडिफाई करेंगे कि लॉगिन करने पे क्या दिखेगा. And these are the only two tabs I want within my application. So till now what I have done, ऐप का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन कैसा होगा, राइट, उसके अंदर ओवरऑल क्या क्या फंक्शनैलिटी दिखेगी एंड टैब्स हम क्या क्या दिखाएंगे. टिल नाउ वी हैव कॉन्फ़िगर्ड. Right now this is something which I can show you via the service console. Okay, let me go to the sales console first. Okay, sales ऐप में हम जाएंगे. This specific step where it is telling you the navigation rules, what does this mean? It means that कि जब आप किसी एक रिकॉर्ड से उसका कोई रिलेटेड रिकॉर्ड खोलते हैं तो वो कैसे खुलेगा. I'll just give you an example. Right, right, let's go to any contact. So right now I am on a contact record page. एक contact के मैं record page पे हूँ and I can see there is a related record for this which is account. So what was this rules I was trying to configure कि आप प्राइमरी रिकॉर्ड से रिलेटेड रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो वो कैसे खुलना चाहिए. If from this contact I click on account, then the contact is completely closed or account खुल चुका है. Now how do I go back to that contact? Right, I see, okay, I do have a link here, but now again account is closed.
right? This is the first form where everything opens in a workspace tab. Every new record opens as a different tab. Now let me go to a service console. Okay, let's go to service console. एक अप्रोच हमने देखा कैसे होता है कि पूरा रिकॉर्ड डायरेक्टली खुल जाता है which happens in the workspace tab. Now in service console, let's me open a case. Okay, I think for this also they have done the first one. Let's check. No, yeah. So you see here what happened. My case is as it is. इसी के अंदर एक सब टैब खुल गया जहाँ पे अकाउंट ऐड. Okay, let me see something else. Let me try a parent case from here. Okay, so this is the same case. This is not a parent. No, but I don't have any related records. Let's see. Contact I have. Again, you see, contact also opened as a sub tab, right? तो ये दूसरा जो लेआउट है, दिस इज मोर हेल्पफुल जब आपको पता है कि मेरे को मल्टीपल चीजें देख के डिसीजन लेना. So then you want all things open in parallel. So this is your second approach when you open data as sub tab. Okay, is this clear? Yes. Everyone else? Yes, Yes, sir. Can you repeat for real quick? Which one? This part. Tab one. Navigation rules, right? Yes. Fine. So Yes. navigation rules आपका क्या बोल रहा है कि within an hour आप कैसा चाहते हैं navigation. There are two ways navigation can happen. One is आपका ये केस है, आप यहाँ से जब किसी रिलेटेड ऑब्जेक्ट खोलते हैं रिकॉर्ड को, तो वो इसी के अंदर एज अ सब टैब ऐड होता जाए. व्हाट डज दैट मीन? आपके पास केस का पेज अभी भी खुला है, अकाउंट का पेज भी खुल गया, राइट? एंड देन लेट मी गो टू कॉन्टैक्ट. Contact also got open. All three are open in parallel. Okay, this is the one of the navigation rules, which is the sub tabs method. And दूसरा जो navigation का type है, that is when you can only have one record open at a time, right? In that case, how it works? Let's go to the contact. Right. So you see here, I have one contact open. अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक account भी है यहाँ. Right. I'll go to the account, but now the contact is closed. Okay. Now account पे जाके मैं देखता हूँ मेरे पास एक opportunity भी है. Let's go to the opportunity. But now opportunity opened and the account again got closed. So you see, it is switching out of that specific tab and going back to the other one. Let me go back to account again. तो मेरा opportunity close हो गया और account फिर से खुल गया. So this means there will only be one record at a time open. That is what the navigation rules means. कि आप अपने ऐप में किस तरह का navigation चाहते हैं. एक टाइम पे एक ही ऐप हो या एक टाइम पे मल्टीपल. Okay. Does that clear your question? Yes. Now, what profiles I want this app to access? Okay, so let's do one thing. Let me just add the
standard user, let me go systematic. Okay, I only want people with these two profile, खाली इन दो type के लोगों को access होना चाहिए, so no other profile will have access to this. Okay, so I'm just save. And we created a new app. Let's go see how our app is. होम आया हमारा, ये होम पेज हम मॉडिफाई करेंगे. We can modify this as per our need. And we have employees. Right. So our system is like this. जब आप खुद से अपना ऐप बनाना चाहते हैं, how does it show here? It got created here. On top. सर हमने इसमें ये कंसोल नेविगेशन चूज करा था क्या? Yes. सर व्हाट इज प्रेफरेबल, कंसोल और स्टैंडर्ड नेविगेशन? No, it's the use case. See, console कैसे टाइप के उसमें यूज होता है? When you are doing something like service cloud implementation जब आप कर रहे हैं. Why? Let's me go to the service console and you will see it far better. आपको console का काम किसके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा? Let's say जब आपको कोई एक कस्टमर कंप्लेंट का इशू, राइट, एंड यू कॉल टू अ एजेंट, राइट, आप एक कस्टमर एक्सपीरियंस के एजेंट को फोन करते हैं कि देखिए मेरा ये कुछ ऑर्डर था, ये था, इसमें कुछ इशू हुआ. नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, which is preferable for them? That they can see all the details like this with all related details visible parallelly. ये वाला UI ज्यादा बेटर होगा या फिर फिर ये वाला ही होगा, यहाँ पे बट यहाँ पे मैं एक चीज जानना देख सकते हैं, जी right? So the thing is, it is just up to your requirement. What is more beneficial? There is a reason कि console apps का UI ऐसा बनाया गया है ताकि आप एक रिकॉर्ड, रिलेटेड रिकॉर्ड सारे एक साथ देख सकें. Let me give you an example. Okay, think of a एक बैंक का एप्लीकेशन ऐप सोचो. बैंक का एक ऐप है जो आपको लोन देता है, राइट? तो आपने एक एप्लीकेशन दिया है, तो उस एप्लीकेशन में आपका सारा डिटेल होगा, उसके साथ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे अलग अलग टाइप के. डॉक्यूमेंट्स का एक अलग होगा जहाँ पे आधार पैन वगैरह सब कुछ आप देंगे, राइट? आपका टैक्स स्टेटमेंट वगैरह अलग होगा जहाँ पे आप आपका सब डिटेल्स देंगे. बैंक अकाउंट्स का अलग रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा. सो इन दैट केस जो रिव्यू कर रहा है आपके लिए एप्लीकेशन, वुड इट बी इजियर फॉर हिम, जैसे अच्छा यहाँ पे केस देखा, फिर वापस हो गया यहाँ पे, राइट, वेयर एम आई ऑन द अकाउंट, राइट, चलो वो जाके रिलेटेड में जाके देखता है, अच्छा इसके डॉक्यूमेंट्स देख लेते. अब डॉक्यूमेंट पे आके अरे एक सेकंड, एप्लीकेशन पे उसने क्या डाला था, लेट्स गो बैक. ओके यहाँ पे आया, ओके फाइन, इट्स मैचिंग नाउ, जस्ट क्रॉस चेक किया, वापस ही गोज बैक टू द डॉक्यूमेंट एंड देन मार्क्स इट अप, राइट. और या फिर अगर उसको पैरेलली पास पास दिख जाता, फंक्शनैलिटी वाइज व्हिच वन वुड हैव बीन बेटर? सर ऑब्वियसली द कंसोल वन, बट मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे एक टैब के अंदर सब टैब्स खुल जाते हैं तो वो उससे Right. बेनिफिशियल हो जाता है हमको एनालाइज करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में. वो तो Right. आता है हमारा नेविगेशन रूल में कि हम जब उसको सब टैब्स सिलेक्ट कर लेते हैं.
राइट मैं पूछ रहा था कि जैसे जब हम ऐप के लिए फर्स्ट स्टेप है जैसे उसका कि उसका नाम और उसका वो लेबल एंड उसका नेम आता है, देन उसके बाद हम राइट वो एक क्वेश्चन पूछते हैं स्टैंडर्ड नेविगेशन की कंसोल नेविगेशन। राइट तो या ये सो जो विद स्टैंडर्ड, ओके फाइन, ओके आई थिंक आई गॉट योर क्वेश्चन। ठीक, तो फिर फॉर स्टैंडर्ड और कंसोल नेविगेशन जब हम कर रहे हैं, राइट, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऐप नेविगेशन? राइट, आप अगर ऐप नेविगेशन के अंदर आप देखिए, व्हाट हैपेंस इज एट द टॉप हियर यू सी ऑल एप्लीकेबल टैब्स अवेलेबल, राइट। आपको ऊपर क्या दिख रहा है? आपका टैब्स दिख रहा है। जी नाउ विद दिस स्टैंडर्ड नेविगेशन at one time I can only have one account open, ओके right? Can I have multiple accounts open here? नो Okay, let's now go here. Mhm. let me let me add accounts here for now. Okay, now what happens, see, डन right? सर, समझ गया। So for whom, which kind of people this will be helpful? Console navigation का helpful किसके लिए रहेगा? People who work with same record multiple times, right? एक साथ 5 cases, 6 cases, 7 applications handle करनी, उसके लिए better है। लेट्स से, लेकिन जब कोई सेल कर रहा है किसी चीज का, राइट, तो उस टाइम पे वो किसी कस्टमर का सब कुछ देखेगा, राइट। वो एक ही जैसे जो सेल्स क्लाउड जब हम पढ़ेंगे यू विल सी देयर इज समथिंग कॉल्ड द लीड टू ऑर्डर पाइपलाइन, राइट। कैसे एक पूरा सेल होता है, प्रोडक्ट कैसे बिकता है, राइट। सो फॉर दैट केस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ओनली वर्किंग विद लीड। ये लीड बाद में कन्वर्ट होता है टू अपॉर्चुनिटी, एंड देन दिस अपॉर्चुनिटी देन कन्वर्टेड टू ऑर्डर, right? So what he needs is, he's with this kind of app, you are not multitasking. Okay, आपका यूज केस कैसा रहेगा? डू यू नीड योर पीपल टू बी एबल टू मल्टीटास्क, और यू वांट ओके एक टाइम पे एक रिकॉर्ड करके काम करना है, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट वी हैव ओनली दैट। राइट सर, डिपेंड्स अपॉन कि कुछ एक रिकॉर्ड के एक टाइम पे देखना है या मल्टीपल रिकॉर्ड देखना है। यस, बिकॉज यहाँ पे द ओनली ऑप्शन यू हैव इज दिस लिस्ट। यहाँ पे इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी, आप यहाँ से, ये मैंने जो अकाउंट्स खोले हैं, राइट, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी ऐड कर दूं, देन ऑल आई विल कीप ऑल दिस अकाउंट्स ओपन, मैं कॉन्टैक्ट भी साथ में खोल लूं। राइट, और उस नेविगेशन रूल के अंदर रिलेटेड उसका हाँ, दैट मल्टीपल इज वो फॉर खुल जाता है। रिलेटेड, विच इज, लेट्स से मैं ये अकाउंट पे जाता हूँ, राइट। अब इसके अंदर मैं, अब यहाँ मैं कॉन्टैक्ट खोलता हूँ, तो इस अकाउंट का रिलेटेड है इसके अंदर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट, बट द पर्पस इज जस्ट दैट। ठीक है सर। राइट, एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, कुछ भी आपको पूछना है? आई नो दिस में सीम वेरी अनफेमिलियर, बट आई वांट यू गाइस टू नो कि आपको अभी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वी आर फ्री टू आस्क। एनीथिंग आई शेयर टुडे जो आपको समझ नहीं आया? एनीवन? No, sir. I will try. Then tomorrow, if in doubt, I will ask. First, I have to practice my own. ओके, नो वरीज। बाकी सब 2 जन का मुझे आवाज। No, sir.
No, what? No, you didn't get it, or no, you don't have any queries. No queries. So you guys can create an app right now, all of you. Yes. Yes, sir. Let me just do one thing. What I'll do is I do have a mm, I don't have steps written somewhere, but it's more generic. Let me just find that. I think simplify management system. Sir, even I'm preparing for the Salesforce admin certification. Okay. Yeah. So even they have some practice on that. So even I'm doing with that also. So but the issue what I'm getting it's उसमें videos नहीं है मतलब theoretical है सारा. Hmm. तो उसके लिए कुछ हेल्प हो सकती है मतलब कहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से वीडियोस या कुछ वैसे तो theoretical पढ़ना तो थोड़ा वैसे हो रहा है. Okay. So for this, I would say I would suggest YouTube. I would actually just suggest YouTube. Okay. Because क्योंकि मैं वो वहाँ पे आपका soचा, जो any topic you want, right, you will find. See, the thing is, अभी आप जब पढ़ रहे हैं तब आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये कैसे होगा, right? What I'll do, how to create a lightning app, right? So then you search on YouTube, you will find detailed video of thousands of people creating a lightning app. okay. Okay. But the thing is, you have to know कि हाँ मेरे को lightning app बनाना. Okay, I think there is some background noise. Something is happening in the street. No, no worries. That is fine. But तो मैं आपको जो बोल रहा था, right? As long as you know what you are looking for, you should be able to find videos for it directly on YouTube. Okay. Okay. Yeah. But ये आपको the content, how you search for it, that is the matter. If you look for just search की you don't know what you are searching for, then आप कैसे वो नहीं कर पाएंगे. But if you know specific tools, terminologies, वहीं पे आपका theoretical से आपको reference लेना पड़ेगा. Let's say there is a specific part. Let's go through this. Can you tell me a specific thing जिसमें आपको issue आया हो, जिसका आपने वीडियो ढूंढने का कोशिश किया? नहीं इशू तो मतलब अभी तक ऐसा नहीं आया मतलब प्लेटफॉर्म फंडामेंटल किया है मैंने और एक दो किए हैं तो लेकिन अभी कैसा जो उसके बाद ऐप क्रिएट करना है कस्टमाइजेशन जो कॉन्फ़िगरेशन करने बोल रहा है ना तो वो इशू थोड़ा देर है तो उसमें फिर मैंने वही सोचा था मैं आपसे पूछूं मतलब कोई यूट्यूब चैनल है जो इजीली कंटेंट जो एक्चुअल कंटेंट जो मिलेगा आपके नज़र में क्योंकि आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन सेल्फोर्स रिलेटेड किए हैं इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है. Right, right. So I would suggest the same thing to you, right? Specific जब आप theory पढ़ रहे हैं, even I would say myself for any of the certifications I have prepared, right? One thing that helps is if you are actually working in a project for the same, right? That is what gives you that edge first. अब जो as आप लोग अभी एक्टिवली किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, so the only thing you can do is your hands on practice जो आप खुद से डेवलपर हाउस पे करें. Now your objective should always be जो थ्योरी में जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, राइट? तो यू हैव टू ट्राई दोस विथ योर हैंड्स. अब कुछ जगह प्रॉब्लम होगा कि जो वो ढूंढने को बोल रहा है आपको मिला ही नहीं, या मे बी द डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट येट अपडेटेड, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया, राइट? वो चीज कहीं और है, इट इज नॉट इन क्विक फाइंड, इट इज विद इन से सम अदर टैब, राइट? So in those cases, because you already know the specific problem, then I think you can just go to YouTube and search for anything. You should be able to mostly get any answers.
अगर आपको कुछ आंसर्स नहीं मिलते, कोई चीज है जो आपको रोक रही है, अटक रहा है, तो जस्ट नो वरीज, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द क्लास, आई कैन गिव यू अ सॉल्यूशन इफ आई हैव इट। अगर मेरे पास इमीडिएटली कुछ सॉल्यूशन नहीं आता, मे बी इट्स समथिंग दैट इवन आई हैव टू थिंक, अरे ये क्या हुआ, तो देन आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन once possible. Sure. Okay. Sir, one Sure. YouTube channel is there. If you allow, may I suggest? Which one? Yeah, Sir, please. it is called Salesforce Hulk. So very detailed. If you want to look at the detailed explanation of any topic, it is also there. And if you want a brief explanation, for that a separate playlist is also there. You just write it down what topic, what you want, and write the prefix sales. Yeah, as I mentioned, you can try this channel. What channel you mentioned? Sir, it's Salesforce Hulk. So fine. You can try this channel. I would always, okay, you guys have to remember, ये जो आप लोगों का जो बैच है, use this as your network. Okay, किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है, आप बैच में पूछो, बाकी किसी को सेम प्रॉब्लम आया है, किसी ने अभी तक सॉल्व किया कि नहीं, अच्छा तुमने ये चीज कैसे की, राइट, व्हाट इज द स्टेप्स जो उसने किया जो आपने नहीं किया, कंपेयर योर स्टेप्स, कंपेयर योर कोड, राइट, यूज दिस टू ग्रो टुगेदर। आपको अपना एरर आएगा, आप सॉल्व कर लोगे, आपको एक एरर सॉल्व करना है, आप बाकी सबका एरर्स भी देखो, आपको 10 एरर पता चले। ओके। एंड सर वन मोर थिंग मेरे को पूछनी थी कि जैसे कल का आपने वो एक एक्सरसाइज दिया था सारी फील्ड्स ऐड करके और राइट। उसमें एक्सपीरियंस निकालना था टू प्रेजेंट डेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो निकल जाता। तो मतलब मैंने फील्ड्स ऐड करी मेरे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके अपने ऑब्जेक्ट में फील्ड्स एंड वो रिलेशनशिप देख रहा हूँ तो सारी दिखती हैं लेकिन पेज लेआउट पे सर 2-2 घंटे नहीं दिखती मेरे को। Yeah, this is something. Okay, so the thing is, there is a lot of releases update happening. अभी इस वक्त आपका समर 25 का अपडेट चल रहा है सेल्सफोर्स ऑर्ग का। उसके बीच में व्हाट हैज हैपेंड इज कि सेल्सफोर्स के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपरफोर्स जो इंस्टेंस, उसका भी अपडेट चल रहा है। सो ड्यू टू दैट हैपनिंग, व्हाट वी आर सीइंग इज इन मल्टीपल इंस्टेंसेस, हर एक अलग अलग इंस्टेंस में आपका जो सेल्सफोर्स ऑर्ग है, इट इज सेव्ड इन सम इंस्टेंस समवेयर। ओके। So in a lot of instances, there are caching, then logging में issues आ रहा है, there are delays in uploads. तो ये कुछ issues आ रहा है अचानक से, for some time the batch is getting unscheduled. So there are some errors which are happening, but mostly Salesforce is up. कोई डाउन टाइम नहीं आया है अभी तक Salesforce में. So this is planned to go away जब आपका समर 25 का रिलीज खत्म हो जाएगा. I think it's maybe 5th 6th जून, उसके बाद you will start seeing this thing. ओके नॉर्मली जो कैशे का इशू भी आता है, इट हैपेंस फॉर लाइक 4-5 मिनट्स, या फिर आपको ब्राउजर का इशू रहता है रादर कि ब्राउजर का कैशे क्लियर नहीं किया, बट इंस्टेंस लेवल पे चल रहा है. दिस इज हैपनिंग फॉर आई थिंक अ मंथ और सो. जैसे जो लोगों के प्रोजेक्ट के सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स में बहुत स्लो हो चुके हैं. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज वर्किंग फाइन, बट सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट जो है तो वो स्लो हो गए, जो उनके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या टेस्टिंग एनवायरनमेंट से भी. So this is something which is happening, but it's not something long term should be solved. I don't think it should be working. ओके ओके Okay, sir. Right. So what I have done is in the chat आप लोग देखेंगे कि मैंने just एक बेसिक, मेरे पास एक दूसरा एक डमी ऐप बनाने का एक इंस्ट्रक्शन था कहीं पे नोट्स में, तो मैंने वो शेयर किया है आप लोगों के लिए. राइट, यू यूज दिस एज अ रेफरेंस, क्रिएट अ लाइटनिंग ऐप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, whatever you want to name it, आप create कीजिए, जिसमें employee tab डालिए. You can also add the account and the contact page also, and then ऐप आप बनाइए, ऐप में लोगो वगैरह डालिए, ऑब्जेक्ट डालिए, प्रोफाइल डालिए. जस्ट आफ्टर दैट डू वन थिंग, जो आपका जो होम पेज है, राइट, आप होम पेज भी ऐड करेंगे राइट ऑब्जेक्ट के साथ. होम पेज पे जाके जस्ट टॉप में क्लिक करना जहाँ पे यू हैव द सेटअप या डेवलपर कंसोल का जो मेनू आता है. Go there and click on edit page.
राइट। वो एडिट पेज पे करके यू जस्ट ट्राई टू प्ले अराउंड विथ समथिंग विच इज अ लाइटनिंग ऐप बिल्डर करके खुलेगा। तो होम पेज को आप मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखिए। Okay, because when tomorrow what we'll be planning to do is we'll be working with अब now the UI part we'll be configuring is कि object level पे जो page layouts वगैरह थे, right, how to modify that, how to configure that। उसके बाद आपका जो record दिख रहा है उस page को कैसे modify करना है। So before that I want you to just play around with that lightning app builder जो है। कुछ नहीं करना, होम पेज पे जाना, एकदम टॉप राइट पे जहाँ से हम सेटअप खोलते हैं वहां पे जाके क्लिक करना, बॉटम में आपको दिखेगा एडिट पेज। ओके, ओके, then just drag and drop, play around, देखो डालने पे क्या होता है, हटाना। Sounds good? Yes, sir. Okay. Oh yeah, sorry. One other thing. No, I'm not sure yet, but maybe tomorrow we may not have class. If we don't have class tomorrow, we will be having a class on Sunday night. Okay, sir. No worries. Okay. If we have class tomorrow, then it is fine. अगर क्लास नहीं होगा कल तो I will have class on Sunday night. I'll just inform Kunal in advance, वो आप लोगों को communicate कर दें। Okay? Sure. Okay then. Thank you everyone. I think for today we just want this main topic